lovely kiddos, how are you all? Welcome to an amazing platform that is your physics wala. I'm your biology mentor, your Doraemon, Himadri ma'am. So let's discuss some important questions of your nutrition in plants today. आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कौन से भैया क्वेश्चन आने वाला है. इससे पहले बता दो तुम चंगा मंगा हो कि नहीं हो. जल्दी बताओ चंगा मंगा सब. कोई दिक्कत तो नहीं है. कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में बताओ, है ना. बातें क्या करें हम ऐसे थोड़ी बहुत. चलो आगे चलते हैं. पहला वाला क्वेश्चन देख लेते कि क्या पूछा है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ऐसा कौन सा मेथड है जो सॉइल इरोजन प्रिवेंट नहीं कर सकता है. रिफॉरेस्टेशन, सिविल कल्चर, प्लांटेशन और deforestation. Obviously that is your deforestation cannot prevent soil erosion, right. आगे बढ़ लेते हैं, पूछ लेते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में. अब डिफाइन पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते थे. पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन होस्ट, विच फीड्स ऑन होस्ट, जो होस्ट पे फीड करते हैं. और जो ये होस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं. दे बेसिकली शेयर देयर न्यूट्रिशन. दे बेसिकली शेयर देयर न्यूट्रिशन. दे बेसिकली शेयर देयर न्यूट्रिशन. शेयर देयर nutrition. They basically share their nutrition. Okay, now what is this term known as nutrition? Now what is nutrition? Nutrition is the mode by which organism can get its nutrients. Okay, but that I have talked to you about that what is nutrition, what is parasite. Now we'll see how to write this answer. Parasite are those organisms which grow on other plants or animals for their food, for their nutrition. Example, in plants there is cuscuta and in animals this is leech. Write it down. I can see you. Write it down. Yes. Okay. That is leech. Now, let's move to the next question quickly. Now, name the bacteria that can fixes atmospheric nitrogen. That is Rhizobium is the bacteria. Okay. Rhizobium is the bacterium which can fix atmospheric nitrogen for the plants. For the plants. Done. Okay, let's move to the next question. Name a parasitic plant with yellow and slender and tubular stem. That is your cuscuta. Cuscuta is also known as your amarbale. It is also known as your amarbale. Okay. Now, let's move to the next question. Give one example of parasite. That is your leech. And your amarbale. Now, name one plant that traps or feed on insects. That is your insectivorous plant. Or known as pitcher plant.
pitcher plant. So the correct option here is pitcher plant. That is, pitcher plant is an insectivorous plant. It is an insectivorous plant. Insectivorous plant which feed on insects. Which feed on insects. What are insectivorous plant? That insect eating plants such as pitcher plant are known as insectivorous plant. That are known as insectivorous plant. Now, what do you mean by nutrition? What is mean by nutrition? Nutrition is the mode. Nutrition is the mode by which organism can get its nutrients. Can get its nutrients. So what are nutrition? Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. That is known as your nutrition. That is known as your nutrition. Now these are the short answers which you need to write it down in this way. Okay. Now, why photosynthesis name so? Since photo means with the help of light and synthesis means making. So with the help of light, photo means light. So with the help of light, plants can make their own food. That is known as photosynthesis. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, that's why it is called as photosynthesis. Photo means light and synthesis means to combine or to make to produce. Okay. Now let's move to the next one. What are heterotrophs? Which do not make their own food, right? Which cannot make their own food. That is animals and most other organisms taken ready-made food. That means they are dependent on ecosystem. They cannot make their own food. That is known as heterotrophs. That are known as heterotrophs. Now let's move to the next one. What are stomata? What are stomata? Stomata are the small pores. Stomata are the small pores present beneath the leaves, which are guarded by the guard cells, which are bean-shaped like structure. Now these are the pores present on the surface of the leaves which help in exchanges of gases and which are guarded by the guard cells, which are guarded by guard cells. Now such pores are called stomata. Such pores are known as stomata. Do insectivorous plants perform photosynthesis? Yes, they can perform. Now, insectivorous plant got leaves, therefore they can do photosynthesis, which means they can prepare their food in the presence of sunlight, as well as they can feed on insects as well. Now, how would you test the presence of starch in the leaf? That is the most interesting, and it could be asked in your subject, that in your exam basically. So I'm making a smiley for that. Okay. Now let's move to the next one. That take an iodine solution used to test the leaf for presence of starch. Test remove the chlorophyll by boiling it. Now do one thing. क्या करना, हमें एक भगोना लेना, उसमें लीफ डाल दो और उसे बॉईल कर दो. ठीक है. जब आप बॉईल करोगे तो लीफ की जो हरी जो पिगमेंट है, जो हरापन है, वो कम हो जाएगा. दैट मीन्स क्लोरोफिल उड़ जाएगी. ठीक है. जैसे ही क्लोरोफिल उड़े, उसके अंदर एक आयोडीन सोल्यूशन डाल दो. ठीक है. आयोडीन इन अल्कोहल, बेसिकली अल्कोहल के अंदर उसे क्या करना है, हमें
पकाना है, किसे, लीफ को, भैया लीफ को बॉईल करना है। जैसे ही कलर ब्लू में चेंज हो जाए दैट मीन समझ जाओ भाई कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटीरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, देख लेते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, okay, carbon dioxide from the air is taken through the tiny pores known as stomata. Now the leaves have green pigment known as chlorophyll. They capture the sunlight, they capture the sunlight, okay, so got it? hands up to kar do. Name the mode of nutrition in fungi. Now fungi, they secrete the digestive juices which act on dead and decaying matter and convert it into a solution. Then they absorb the nutrients from this solution. This mode of nutrition in which organism take in nutrition in the solution from dead and decaying matter, it's called saprophytic nutrition. It's called saprophytic nutrition because यहाँ पे जो digestion हो रहा है वो external हो रहा है। हम पहले खाना खाते हैं फिर खाना पचता है, ये पहले खाना पचाते हैं, ठीक है, ये पहले उसे न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में, सारे न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में तोड़ते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स ये लोग रिलीज करते हैं, फिर ये लोग खाना खाते हैं, फिर ये लोग खाना खाते हैं, ठीक है, कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। If the pitcher plant is green and carried out photosynthesis, then why does they feed on insect? मतलब कि अगर ये लोग ओके अगर ये लोग खाना बना रहे हैं, ठीक है, अगर ये लोग फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इंसेक्ट पे क्यों फीड करते हैं? दिस प्लांट ग्रो इन द सॉइल दैट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब कि इनकी जो सॉइल, जिस सॉइल में ये प्रेजेंट होते हैं तो इनको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। These plant, that is pitcher plant, are green and carried out photosynthesis to obtain a part of food required by them. So they feed on insect to obtain the nitrogen. नाइट्रोजन ताकि मिल पाए इसलिए वो इंसेक्ट को क्या करते हैं? फीड करते हैं, क्योंकि वो जिस सॉइल में पैदा होते हैं, जिस सॉइल में वो ग्रो करते हैं, उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, डेफिशिएंट होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? आगे बढ़ सकते हैं? यस मैम, आगे बढ़ सकते हैं। हाउ डू प्लांट ट्रांसपोर्ट रॉ मटीरियल to the food factories? Now with the help of water and minerals are transported through the leaves by the vessels known as xylem vessels, okay, now which run through the pipe, throughout the pipe or the root, the stem, the branches and the leaves. They forms a continuous path for the nutrients to reach the leaf. The leaves have a green pigment known as chlorophyll that helps to capture the energy, and then the leaves are the food factories which can make the food for the rest of the plant. Okay, let's move to the next question. From where do the plant obtain nitrogen? नाइट्रोजन कैसे मिलती है उन्हें? प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है soil से. It is present in abundant gaseous form in the air. However, plant cannot absorb nitrogen directly. Basically soil has certain bacteria, that is your rhizobium, that converted into soluble form, जो उसे soluble form में convert कर देते हैं बेटा. तो नाइट्रोजन क्या है? बहुत सारी एयर में प्रेजेंट है, मगर वो डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं. इसलिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि राइजोबियम, जो कि हेल्प करता है उनको नाइट्रोजन पहुंचाने में. कैसे? उनको कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल फॉर्म में, ताकि प्लांट उन्हें ले पाए, और बदले में प्लांट उन्हें क्या देते हैं? घर देते हैं. तो इस टाइप की रिलेशनशिप को कौन सी रिलेशनशिप कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. बात समझ आई? कोई भी डाउट? आगे बढ़ सकते हैं.
Now these soluble forms are absorbed by the plant along with water. Farmers added fertilizers rich in nitrogen to the soil. फर्टिलाइजर्स बेसिकली फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं ताकि उन्हें नाइट्रोजन मिल पाए. ठीक है, कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं. Now, how farmers are benefited from a symbiotic relationship between rhizobium and legumes. Now this association is a great significance for the farmer क्योंकि farmer को fertilizers की जरूरत नहीं पड़ती है. This bacterium called as rhizobium present in the leguminous plant में लोग present होते हैं, take up the atmospheric nitrogen और उसे convert कर देते हैं किसमें, soluble form में, so that they do not need any nitrogen fertilizers, ताकि fertilizers ऐड करने की जरूरत ना पड़े, in which the leguminous plant are grown. समझ आ गया? कोई भी डाउट है? बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे और ये इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग. ठीक है, आराम से पढ़ाई करो. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर में जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में. किस में मिलेंगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में. तब तक के लिए सयोनारा, बाय बाय कर दो, बाय बाय.